Okay, sir. Done. आज का हमारा लेक्चर डॉक्टर सुभाष वाघे, यूजी फ्रॉम जीएसी नागपुर, पीजी इन रोग निदान फ्रॉम श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर, पीएचडी in MUHS, PhD scholar. Besides this, he has done 10 other degrees and diploma to his credits. He wrote 21 Ayurvedic books. He wrote 50 research articles in various peer-reviewed ISN journals. He twice got Best Book of the Year award from Nanade Foundation, Pune. He received prestigious Vaidya Yadaji Tikranji Granth Puraskar from Vaidya Khadiwale, Pakistan, Pune. Received Dhanvantari Award. Received Best Global Teacher Award. Best Researcher Award. He received law. He revised 8 laws Sahitas of Ayurveda and was facilitated at Latur by Ayurveda Update Group for the same. He presented many research papers in various national and international conferences. He twice got Best Paper Award. He was a member of team for framing Nidan Dictionary by GOI. He was invited as a resource person to many national and international seminars and conferences. He took lectures for international delegates of Brazil, Portugal, and Russia. Presently, he is the president of RBGPGA organization and life member of many other organizations. He is editor-in-chief of IJTR Journal, and he is on the editorial board of many peer-reviewed ISN journals. He is editor-in-chief of RBPAG International Publication. Mic to Dr. Subhash Pandey, sir. Thank you very much, Dr. Zair, for precisely introducing me. And we are already late. Without wasting much time, we will directly switch on to the subject. But before I actually start the topic, I would like to bring attention of the audience to certain recollection of the things about normal physiology before going for the pathophysiology of anemia. And I request everyone to mute their mic so that there should not be any nuisance in between. Okay. So just recall your first year days wherein you studied the production of RBCs from pluripotent stem cells of the red bone marrow. And there is a mixed myeloid series from where the erythroid series from BFU E0 and CFU E0. There is a early normoblast, late normoblast, intermediate normoblast, and reticulocytes, and then the erythrocyte, RBC, matured RBC. Okay, and since this is a mixed myeloid series, from granulocyte monocyte, there is a formation of neutrophil, which is a granulocyte, and the monocyte. Okay, and from CFU E0, eosinophil, CFU colony-forming units, B0, there is basophil formation. And from CFU megakaryocytes, there is a formation of platelets. So this is a common cell lines from which these different blood cells, they are developing, RBCs, WBCs. Okay, and there is another lymphoid series from which the T lymphocytes and B lymphocytes are formed, which are involved in the immune process. Okay, why this is important? Because the subsequent pathologies which we are going to see. So to understand it very clearly, we must have certain basic idea of the things. Okay. Now moving further. So what are the requirements for erythropoiesis? Means the process of formation of RBCs, a hormone erythropoietins, the
is in response to oxygen. Iron for HB, vitamin B1, B6, B12 for DNA maturation, trace metals such as cobalts, and the vitamin C. These are the requirements. Okay. Now, iron is absorbed in body, which is in ferrous form, and it is converted into the ferric form and stored as the ferritin. Okay. And this ferritin, the stored ferritin is supplied to the body as per the need. So in plasma, whenever there is a need arises, these two atoms of iron, they combines with one molecule of transferrin. This is called as total iron binding capacity. And this complex of transferrin with iron, it gets bound to the developing erythrocytes in the bone marrow, wherein this complex breaks and iron is supplied to the inside the cell, and it goes to the mitochondria, where it combines with the protoporphyrins to form the heme component. Then it mix with the alpha and beta polypeptide chains forms on the ribosomes to give rise to the hemoglobin. There how the hemoglobin is formed. Now, the most of the hemoglobin is, now there are three hemoglobins: HbF, fetal hemoglobin, HbA2, which remains in small quantity in adult life also, and HbA, which is the predominant Hb in our body, almost 97%. HbF and HbA2, it counts 1 to 3%. So HbA hemoglobin, it has the alpha 2 beta 2 polypeptide chain. HbA2 has the alpha 2 delta 2 polypeptide chain, and HbF has the alpha 2 gamma 2 polypeptide chain. Now, why this is important? Why I'm recollecting you all this? Because this will be important when we'll have to study the thalassemia. Okay, and the formation of RBCs from committed stem cell series in the for knowing the aplastic end. Okay, so we will move further, but before that, this basic knowledge should be there. There are some other terminologies in with regard to anemia, and there is, when there is alteration in size and shape of the RBCs. When the RBCs is small, it is called as microcyte. When it is large, it is called as macrocytic, and accordingly, the resultant anemia is termed as microcytic or macrocytic anemia. There are some size variations: anisocytosis, spiculocytosis, abnormal shape variation, likewise, and this we should keep in mind. Whenever the size is increased, the mean corpuscular volume is increased. Whenever size is decreased, the mean corpuscular volume is decreased. This thing should be kept in mind to understand the things. Now, let us move on to those things one by one. I will share the PPT, not much, but to just to explain. I will request everyone to mute their mic so that there is no disturbance. Okay. Now, as I anemia is a condition wherein there is a decrease in number of red blood cells in the blood, and because of decrease in number of red RBCs, the oxygen carrying capacity of the blood is decreased, and as a result of which there is hypoxia to the tissues. Okay, so जब बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन बरोबर से नहीं मिलता है, तो वॉट एवर दी अवेलेबल ब्लड रहता है उसी के साथ उसको काम चलाना पड़ता है. तो जो हम चलते फिरते हैं, पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, जल्दी थकावट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, एंड हृदय पे बर्डन आता है कि उतनी से अवेलेबल आरबीसी के साथ शरीर का काम चलाए. सो इसका ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. तो यहाँ हम पहली स्लाइड में देख रहे हैं कि नॉर्मल साइड में
देखो आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, और जब एनीमिया होता है तो आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन जब लेस हो जाता है। मैं इस प्रकार से ये लेक्चर पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, स्टूडेंट को समझ में आए इस प्रकार से ही मूव ऑन होंगे। So first in the classification is microcytic hypochromic anemia. माइक्रोसाइटिक मैंने पहले बताया आपको कि सेल आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, साइटिक मीन्स द सेल, and hypo means again the small, little, and chromic means the color. The color of the RBC, the central pallor is increased. So iron deficiency anemia, the most likely causes are the nutritional and post hemorrhage. हमको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो आयरन डेफिशिएंट डाइट होने के कारण, और इंडिया में ये बहुत खासकर विलेजेस में प्रिवेलेंट है, आयरन डेफिशिएंट डाइट की वजह से न्यूट्रिशनल और पोस्ट हिमोरेजिक, जो बॉडी से कोई ब्लड लॉस हो गया, चोट लग गई, सीवियर ब्लड लॉस, ब्लड चला गया, मेनोरिजिया मेट्रोलिजिया लाइक कंडीशंस उसमें, या कोई माल एब्सॉर्प्शन पैथोलॉजी है, इंक्रीज डिमांड है जैसे प्रेगनेंसी है, ग्रोथ पीरियड का है, उस समय अगर ये सब न्यूट्रिशन नहीं मिले या ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो उस कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की फीचर जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है। फीचर्स में जैसे लैसिट्यूड है, वीकनेस है, क्रैम्प्स इन लेग्स है, देयर इज डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, टिनिटस, कर्णनाद, कानों में आवाज होना, हाथ पैर में चिटिया चलना, नमनेस, पैरास्थेशिया। And what signs you can get as the heart has to work with the limited resources, it beats faster and faster. That results in tachycardia, and tachycardia in turn may result in cardiomegaly. हृदय की वृद्धि, हृदय का साइज बढ़ सकता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, the hairs become brittle, जल्दी जल्दी उखड़ने लगते हैं, बाल स्पार्स हो जाते हैं, और the nail beds, the nail beds becomes also thin, brittle, टूटने की संभावना रहती है, और स्पून शेपेड हो जाते हैं, फाइलोंचिया जिसको बोलते हैं। ओके, आंखों में हमको कंजंक्टिवल पैलर मिलेगा, जो स्किन है पेल मिलेगी, नाखून नेल बेड्स पेल मिलेंगे, और देयर कुड बी अ ग्लॉसाइटिस which is called as Patterson-Brown-Kelly syndrome. Okay, and there could be difficulty in deglutition, पदार्थों को निगलने में तकलीफ होना, that is referred as Plummer-Vinson syndrome. So ये कुछ साइंस हमको मिल सकते हैं और सिम्टम्स हमने देखे हैं, तो ये आयरन डेफिशिएंसी की फीचर्स हमको ऐसे मिल सकते हैं। सेकंड है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, कार्सिनोमा, ओस्टियोमाइलिटिस, ये क्रॉनिक बहुत समय तक चलने वाले डिसीजेस है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस डिसीजेस इज दैट देयर इज altered response to hypoxia, means erythropoietin is not properly formed, and there is, whenever if it is formed, the survival rate of the RBCs, it is decreased. So in such cases, unless until there is no point in supplying the hematinics, खून बढ़ाने वाली औषधि देके कोई मतलब नहीं, unless until you address the basic root cause of the disease. You have to treat the original disease that automatically corrects the anemia. Okay. Third category is inactive erythropoiesis. This we will learn in hemolytic anemias also. But the first is sideroblastic anemia, lead poisoning, thalassemia. Thalassemia we will discuss in under the hemolytic anemias. Sideroblastic anemias, it is X-linked disease. The gene is carried by the females, and males are the affected. Male offsprings are affected. It could be acquired also, secondary also, because of the offending drugs. Okay, so in PS, peripheral sphere, you can get the ring sideroblasts, wherein
The RBC is with center nucleus. There is no nucleus in normal RBCs, but it could be a nucleated one with the rings of the iron in the center. That is why it is called as the sideroblastic anemia. Features will be the same as I discussed earlier. Okay, and the inherited type, it responds to the pyridoxine, B6 type, B6 vitamin. Okay, so you see here in slide, you can see the size of the RBC is smaller. Now here you can see it is the bigger one. Hence it is called as the macrocytic hypochrome. Now it is of two types, megaloblastic and non-megaloblastic. Again, megalo means big blast, the bone marrow cell, big bone marrow RBCs. Causes are vitamin B12 deficiency and folate deficiency You see, before I describe them, there is intense DNA synthesis in myeloid series for the RBC maturation. So the folate and B12 are required for RBC maturation. When the body is deficient in B12 and folate, the RBC maturation gets delayed. That's why the size of the RBC increases. Size of the RBC increases, but as it is not a normal RBC, it gets destructed in the bone marrow itself. So there is even before it is released as the reticulocytes. So there is, and because of huge destruction of the RBCs, the great amount of lactose dehydrogenase, which is a cytosol enzyme in the RBCs, mostly found, it is also get liberated in the blood. So in such type of anemia, where you will get in PS, there will be a macrocytosis, and in serum findings, HB will be low, B12 level will be low, folate level may be low, and LDH is raised. And the bone marrow, sometimes you go for bone marrow sampling also, and that may show the excess of the iron, but this type of blast cells. So coming to this vitamin B12 deficiency, which is due to the less intake of vitamin B12 in the diet. We Indians, being the particularly your Gujarat area, which is a strict vegetarian area, because of that, there is a vitamin B12 deficiency. There could be a malabsorption syndrome, the tropical sprue-like condition or bacterial overgrowth where the vitamin B12 is not absorbed properly. This is small bowel pathologies, particularly I am referring to. These are some conditions because of which you may get vitamin B12 deficiency. And this pernicious anemia, which is due to the gastric atrophy and achlorhydria-like conditions where there is no formation of intrinsic factor, which is necessary for the absorption of the vitamin B12. So concomitant autoimmune diseases are also found with it, mostly the thyroid and the leukoderma-like conditions. Mostly thyroid antibody is found in 50% of the patients, mostly females are affected. And two types of things that, two types of antibodies, one which inhibits the joining of vitamin B12 with the intrinsic factor. And another is when the complex vitamin B12 and intrinsic factor complex is formed, it inhibits its entry on the receptor site. These two types of antibodies are seen. The features, what you could get likely are that
all the features of anemia, which I told earlier, plus now here, as there is a hemolysis. So one can get a lemon yellow type of jaundice also. So if you do the investigation also along with the earlier findings which I mentioned, you can get the unconjugated hyperbilirubinemia in this condition also. But it is not that greatly increased as in hemolytic conditions, pure hemolytic conditions. So along with this, when the level of B12 it goes below 60 nanogram per deciliter, then neurological features may also develop. There could be paresthesia, tingling, numbness in hands, loss of position sense, dementia, loss of memory, and judgmental errors. These things can occur, and when these things occur, it takes a long time to recover. You have to give the injectable B12 with simultaneous administration of folic acid also, because they work hand in hand, unison. Folate deficiency also results because of the same causes which I enumerated: less supply, faulty absorption. And you see, the laboratory findings are the same, but when you correct the folate deficiency anemia, generally we give 5 mg folic acid tablet daily, and that it is supplied in that government centers also. But it is very necessary to see the level of vitamin B12, whether it is normal or not, while supplementing the folate tablet, because it may consume all the vitamin B12 and there may be a deficient one. So the level of vitamin B12 should be normal while giving the folate. So 4 to 12 microgram per liter is the normal range. A red cell folate may even get decreased when you assess the serology, and the folate levels may also be decreased. The next is the non-megaloblastic. Under non-megaloblastic criteria, the physiologically you may find in pregnancy or newborn, pathologically alcoholism, chronic liver disease, hypothyroidism, aplastic anemia. Aplastic anemia we will discuss in under normocytic normochromic anemia. And hypopituitarism, hypoadrenalism also can give rise to such type of things, for which the pathophysiology is unknown, but there is a raised MCV. Coming to the normocytic normochromic classification, wherein the first category is wherein there is impaired cell production with leukocytes and platelets normal, that is physiological anemia of infancy or due to infections. It could be because of pure congenital anemia, red cell RBC anemia, with leukocytes and platelets normals or reduced. Chronic liver disease, chronic renal disease, hypothyroidism, hypopituitarism, hypoadrenalism, and hematological disorders such as aplastic. Now here, aplastic anemia, what is meant by aplasia? Now just recall the things which I mentioned in the starting of the lecture. Formation of RBCs from 3 mixed myeloid cells, this committed stem cell series from pluripotent stem cells of the red bone marrow, wherein RBC was forming, WBC was forming, and the platelets were forming. Okay. Now what happens in aplastic anemia? There is pancytopenia. There could be aplasia of all the 3 cell lines, so that the cells doesn't repopulate in the bone marrow, doesn't get formed. So there is deficiency of RBC. RBCs are not formed, WBCs are not formed, and the platelets are not formed.
aplasia, hypocellularity of all the three cell lines. What will be so this could be either inherited one, such as Fanconi's anemia, or acquired one due to offending infections or offending drugs. Those can cause the aplastic anemia. What could be the likely features? So if the cell line that is producing RBC is suppressed, all the features of anemia which was enumerated earlier, those will occur. Plus, now what is happening here, white blood cells, they are also not forming. So the affected individual or affected child will get infections very easily. There will be repeated infection episodes. And what is other thing? The other thing is that platelets are also not forming. So the function of the platelets is to arrest the bleeding. So there will be an easy tendency for the bleeding, easy bruising. There will be epistaxis. Brush करने जाएगा तो there will be bleeding gums. नाक से खून आएगा, epistaxis आएगा. Likewise, ecchymosis, स्किन पे चकते आ जाएंगे. इस प्रकार की लक्षण हमको उसमें मिल सकते हैं. और जब आप इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो हमको पैनसाइटोमेनिक पिक्चर्स मिल सकता है. ट्रीटमेंट में क्या हमको ऑफेंडिंग कॉज इसका रोकना पड़ता है, जहां तक एक्वायर्ड कॉजेस और सेकेंडरी कॉजेस है. और अगर इनहेरिटेड वन है तो उसको आपको जेनेटिक ट्रीटमेंट वो और जीन ट्रांसफर वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है. इसका जो हेरिडिटरी टाइप जो डिस्क्राइब किया है वो फैंकोनीज एनीमिया, वेयर इज देयर इज माइक्रोसेफेली, हेड छोटा हो जाता है, और देयर इज अ डिप्रेस्ड ब्रिज ऑफ द नोज, ब्राउनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. ये कुछ फीचर्स उसमें हाइपोगोनेडिज्म दिखते हैं. और अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है वो बहुत कम हो गई, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो गई, आरबीसी की संख्या बहुत कम हो, तो ये वेरी बैड प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स होता है. द कमिंग टू द हिमोलाइटिक, मैं थोड़ा शॉर्ट में आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है और एक सिटिंग में कवर करना पूरा पॉसिबल नहीं, फिर भी जितना हो सके उतना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे. दो तरह का हेमोलाइटिक एनीमिया, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम इंट्राकॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट्स और एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर डिफेक्ट्स. इंट्राकॉर्पुस्कुलर मींस सेल के अंदर के डिफेक्ट, आरबीसी के अंदर के डिफेक्ट, और एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर आरबीसी के बाहर के डिफेक्ट. Intracorpuscular defects, there could be hereditary red cell enzyme deficiency, for example, G6PD deficiency, pyruvic kinase deficiency, red cell membrane defects such as hereditary spherocytosis, elliptocytosis, acanthosis, propoikilocytosis, xeroptocytosis, hemoglobinopathies such as sickle cell disease and hemoglobin CDE, ineffective erythropoiesis, thalassemia-like condition. So let us see one by one each one of them. For example, what is G6PD deficiency? Glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme. You see, every cell needs the energy for performing various functions. And which is the energy molecule? ATP. So in RBCs, there is no mitochondria as like in other cells, which is a powerhouse of the cell, which gives the power to the cell in the form of ATPs. So there is a separate glycolytic pathway which is called as Embden-Merhoff pathway in the RBCs, which generates the ATPs for performing various functions. And there is hexose monophosphate shunt which provides the reducing power to the RBC in the form of NADPH. And G6PD is the first enzyme in the above pathways. But what if
if the G6PD is not there, the above pathway will get disturbed. There will not be reducing power to the RBC. So the disorder is an excellent one. The females are the carriers and males are the sufferers. So in such individuals, when you, these individuals are absolutely normal, there is no problem at all. But when these individuals are subjected to certain type of drugs with oxidizing properties, such as sulfonamides, probenecid acid, nalidixic acid, antimalarials such as primaquine, when the person get malaria and these drugs are employed, such as primaquine, you see, now the RBC is not having the reducing power, and you are administering the drugs with oxidizing property. So it will cause the hemolysis, breakdown of the RBCs. So that there will be the features of anemia as well as the hyperbilirubinemia. There will be pallor, there will be icterus, weakness. So when you do the investigation, the supravital staining of the RBCs may show hens bodies. There is reticulocytosis, because of an unconjugated hyperbilirubinemia may be seen. Unconjugated bilirubin is raised, and the G6PD enzyme, these levels that can be assessed several weeks after the episode, because the young surviving cells, they may not be deficient in the G6PD. Treatment is to stop the offending drug and other symptomatic management. Then pyruvate kinase deficiency. It is also inherited autosomal dominant disorders, wherein there is, because of these low levels of pyruvate kinase in the RBC, the sodium pump gets altered, and the potassium is leaked out from the cell, and the survival rate of the RBC is decreased, and it gets disintegrated early. That's why also there is anemia. The boy becomes increasingly pale. There is icterus, there is weakness, everything like as earlier said. And when you assess the investigation, the red cell pyruvate kinase levels, they may be low. Now moving further, hereditary red cell membrane defects. So first is hereditary spherocytosis. Spheros means spherical. Cyto means the cell. When जब cell spherical बन जाती, RBC का साइज कैसा है? Elongated टाइप का साइज है. Spherical, absolutely spherical नहीं है. जब इसका नाम ही है hereditary, so it is inherited disorder. Inherited disorder. But कुछ conditions ऐसी होती है, जैसे कुछ एसिडोसिस वगैरह की बॉडी में हुआ, तो ये टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है आरबीसी को स्पेरिकल बनने की. जब आरबीसी स्पेरिकल बन जाती है तो एंड इट बिकम्स रिजिड आल्सो, इट कैन नॉट पास थ्रू द स्प्लेनिक माइक्रो सर्कुलेशन एंड गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, हिमोलाइज्ड. स्प्लीन से वो पास ऑन नहीं हो सकती है, इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, एंड द रिजल्टेंट इज द एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया. तो ऐसे ही कुछ शेप चेंजेस, जैसे इलेप्टोसाइटोसिस है, एकांथोसिस है, जैसे जिसमें आरबीसी ज्यादा इलिप्टिकल हो जाती है, एकांथोसिस में थॉर्नी प्रोजेक्शंस हो जाते हैं. ऐसे ये सब मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स है, जिसकी वजह से सेम मैकेनिज्म से सर्कुलेशन से आउट कर दिए जाते हैं, और रिजल्टेंट इज द एनीमिया. गॉट माय पॉइंट? समझता हूं यहां तक सबको समझ गया है. और जब भी हिमोलिसिस होता है, दो टाइप का हिमोलिसिस होता है, इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर. एक्स्ट्रावास्कुलर जैसे स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है, बोन मैरो में होता है, और इंट्रावास्कुलर अपने आर्टरीज के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में.
सो जब ब्लड प्लाज्मा में फ्री, जब आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाती है और फ्री एचबी लिबरेट हो जाता है, एचबी आरबीसी ब्रेक डाउन के बाद हिम फ्रैक्शन, ग्लोबिन फ्रैक्शन। तो हीमोग्लोबिन पहले सबसे पहले जब बाहर आता है, इट कंबाइंस विद द प्लाज्मा हेप्टोग्लोबिन और उसका कॉम्प्लेक्स बनता है और वो मूव ऑन होते 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 लीवर में जाता है, इट गेट्स डिग्रेडेड और एचबी फिर अल्बुमिन के साथ मिला के एक मेट हेमोग्लोबिन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। और कुछ बचा हुआ एचबी जो है किडनी से फिल्टर होके यूरिन में आता है, वहां से भी कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वहां डिग्रेडेशन होके आयरन जो है वो किडनी में स्टोर हो जाता है, तो उसमें हीमोसिडोनेरिया भी रिजल्टेंट हो जाता है, ब्लैक कलर की यूरिन आती है उस वजह से। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज में सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल डिसीज का नाम लगभग सबने सुना है, और जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, खासकर हमारा पार्ट विदर्भ का पार्ट, यहाँ ये डिजीज कॉमन है। What happens in sickle cell disease that it is also inherited defect wherein the valine is substituted for glutamic acid on the beta polypeptide chain, जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो इस वजह से क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसी की भी टेंडेंसी सिकल टाइप के चांद के जैसे होने की, क्रिसेंट शेप्ड होने की टेंडेंसी कब बढ़ती है मगर जब एसिडोसिस लाइक कंडीशंस हो बॉडी में, एनॉक्सिमिया की कंडीशंस हो, हाइपोक्सिया की कंडीशंस हो, तो ब्लड आरबीसी सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है और जब जमने की स्थिति हो जाती है, कैपिलरी स्लजिंग हो जाती है, ये क्रिसेंट शेपेड होके कैपिलरीज में स्लज वहां बनाती है, गार्बेज टाइप का कचराट के समान, ये सारी चीज एक के ऊपर ऐसे जमा होने लगती है। दूसरी पैथोफिजियोलॉजी में जहां बॉडी से फ्लूइड बहुत निकल गया, डिहाइड्रेशन की स्टेट होगी, हीमो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ऐसी स्थिति में भी ये क्रिसेंट शेपेड होके स्लजिंग फॉर्म करते हैं। स्लजिंग से क्या होगा, रास्ता जाम होगा तो देयर विल बी इश्चीमिया, देयर विल बी इन्फार्क्ट, और जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, जहां जहां ये सब हो रहा है, उस ऑर्गन का पहले पेन, इश्चीमिया के कारण पेन हुआ और उसके बाद इन्फेक्शन के कारण वहां का नेक्रोसिस। तो और हिमोलिसिस हो रहा है साथ में, तो एनीमिया के फीचर्स मिलेंगे हमको, हिमोलिसिस हो रहा तो जॉन्डिस भी मिलेगा, मगर ये अनकॉन्जुगेटेड टाइप का बिलिरुबिन रहेगा। और जॉइंट्स में जॉइंट पेन मिलेंगे, हिप बोन की तरफ जाए, हिप बोन का नेक्रोसिस होके हिप पेन स्टार्ट हो सकता है। आंखों के आर्टरीज का सप्लाई करने वाले में वहां अगर हो गए तो ब्लाइंडनेस रिजल्टेड हो सकता है। ऐसे लाइकवाइज there could be there is a hepatomegaly, splenomegaly because of the this hemolytic condition। तो ऐसे बहुत सारी फीचर्स उसमें मिल सकते हैं, जब भी खासकर जब ये ऐसी कंडीशंस जहाँ कोई इन्फेक्शन पकड़ गया, जहाँ कोई इन्फेक्टिव डायरिया हो गया, ऐसे में ये एपिसोड प्रेसिपिटेट हो जाए, और ऐसे एपिसोड्स बार बार आते रहते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में। तो आप इसमें जो है दो टाइप होते हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में एक ही पेरेंट से जो एचबीएस टाइप का जो जीन है वो आता है, और जो होमोजाइगस होता है उसमें दोनों पेरेंट से एचबीएस टाइप का जीन आता है, तो वो रिजल्टेंट जो एचबी होता है वो एचबी एसएस टाइप का होता है। सो हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसका जो बेसिकली प्राइमरी जो है, हम वो हमारे इसमें अर्ली और लेट सिकलिंग देखते हैं, सोडियम बीटा बाइसल्फाइड को ये करके, तो उसमें पॉजिटिविटी मिल सकती है, दोनों पेरेंट्स को भी इसके लिए पॉजिटिव मिल सकते हैं, मगर डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस होता है वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है, वेरिन यू गेट द एचबी एसएस पैटर्न। एचबी का जो पैटर्न आता है वो एसएस पैटर्न होता है। और ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे प्रोफिलेक्टिक चीजें से ऐसे एंड होता है तो
एनर्जेसिया का करेक्शन सोडा बाइकार्ब देना पड़ता है। इस प्रकार मैनेजमेंट जनरली होता है। अभी खासकर जो जैसे फीटल जैसे ये एचबी प्रॉब्लमेटिक है, तो फीटल एचबी का बढ़ावा देने के लिए जैसे ब्यूट्रेट्स हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया, ऐसे ड्रग्स आए हैं। दे हैव चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एंड आउटकम ऑफ द सिकल सेल डिसीज टुवर्ड्स द बेटर वन। डीडीबी जैसे ड्रग्स होते हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे ड्रग होते हैं जो एचबीएस का लेवल कम कर सकते हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स है। हम मैनेजमेंट पक्ष की तरफ उतना ज्यादा नहीं जाएंगे, तो छोटा फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया देना है आपको, इसलिए ये सब आइडिया दिया। तो और ये सिकल सेल टाइप का अदर टाइप का जो है सी डी, ये कुछ ये सी टाइप पंजाबी कम्युनिटी में, डी बंगाली टाइप में, और ये इटालियन लोगों में हो सकता है। तो वो कोई बहुत रेयरली मिलते हैं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। इनफेक्टिव इरेथ्रोपाइसिस, थैलेसीमिया। अब इन इफेक्टिव इरेथ्रोपाइसिस, ये वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि इरेथ्रोपाइसिस तो हो रहा है, आरबीसी बनने की प्रक्रिया हो रही है, बट दैट इज इनइफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है। व्हाई दिस इज ऑकरिंग? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे बॉडी में तीन टाइप के एचबी है। एचबी ए, जिसमें अल्फा टू बीटा टू पॉलीपेप्टाइड चेन है, HbA2 जिसमें अल्फा टू डेल्टा टू पॉलीपेप्टाइड चेन है, और HbF जिसमें अल्फा टू गामा टू पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें से HbA जो है ये प्रिडोमिनेंट HB है 97%। अब ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें ये, इसमें भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टाइप का होता है। होमोजाइगस जिसमें दोनों पेरेंट्स से ये डिफेक्टिव बीटा थैल जीन अफेक्टेड इंडिविजुअल में आ जाता है, और हेट्रोजाइगस जिसमें अलॉन्ग विथ अफेक्टेड बीटा थैल जीन नॉर्मल बीटा जीन आल्सो इज इनहेरिटेड। सो वो लोग थोड़े बचे हुए रहते हैं। बट जिनमें ये दोनों पेरेंट्स से ये जीन आता है, बीटा थैल जीन, उसमें क्या होता है कि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनती नहीं है। Either there is suppression or there is mutation. Mutation in the genes causes either there is suppression or altered formation of the chain. तो बीटा चेन का फॉर्मेशन सप्रेशन होने से क्या हो रहा है, फिर HbF और HbA2 ये ज्यादा बन रहे हैं। HbF में क्या है, अल्फा टू गामा टू, और HbA2 में क्या है, अल्फा टू डेल्टा टू। So alpha to alpha tetramers are forming instead of the beta chain. beta two नहीं फॉर्म हो रहा है, और बॉडी को क्या है, समझता है कि ये एबनॉर्मल है। तो आरबीसी भी ये अल्फा टेट्रामेर्स जो फॉर्म होती है, बॉडी क्या समझती है, अरे ये फॉर्म तो हो गया, मैं गलत है। सो इट इज डिस्ट्रॉयड इन दी बोन मैरो इटसेल्फ इवन बिफोर इट इज रिलीज एज द रेटिकुलोसाइट्स। तो ये विशेष साइकिल चलती, बॉडी बोलती है चलो आरबीसी की कमतरता बहुत होगी, खून की आरबीसी की कमतरता होगी, आरबीसी बनाओ। तो वो बोन मैरो जो है अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाता है, डबल टिबल 4 टाइम 10 टाइम्स कर देता है, मेडुलरी स्पेस बढ़ा देता है। बट बनना चालू होते हैं, मगर फिर से वही साइकिल, अल्फा 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 टू टेट्रामेर्स बन रहे, फिर और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। बॉडी बोल रही नहीं है, मुझे सप्लाई करो, ये सप्लाई करने को देखता है, बट वही डिफेक्टिव बन रहा है। द विशियस साइकिल इज रिपीटेड। दैट्स व्हाई, so what will happen? Ineffective erythropoiesis, RBC form the features of all the features of anemia which I enumerated earlier वो होगी। अनकॉन्जुगेटेड हाइपोबिलिरुबिnemia मिलेगा, LDH बॉडी में मिलेगी, रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशंस में ये जो हम ब्लड सैंपलिंग का जेनेटिक सैंपलिंग करते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये थैलेसीमिया है। और जनरली इसमें जो मैनेजमेंट होता है वही बच्चों को जब डिटेक्ट होने के बाद फ्रिक्वेंटली, जैसे महीने में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते रहना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड ज्यादा बढ़ता है, आयरन चिलेटिंग एजेंट डेफोरेक्सामाइन जैसे या डेफेरिप्रॉम जैसे देने पड़ते हैं। तो वो उसका मैनेजमेंट पार्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट
एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट्स। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते जाएंगे ताकि आपके समझ में आते जाए, एकदम से ओवरलोड ना हो जाए। इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून, एलो इम्यून। एलो इम्यून RH और ABO इनकम्पेटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव बेबी है, तो फीटो मैटरनल रूट की वजह से जो समझो फीटस की RBC जिसमें रिसस एंटीजन पॉजिटिव है, RH नेगेटिव मदर्स में चली गई, तो मदर की बॉडी क्या प्रेडिक्ट करती है, अरे ये कुछ तो भी पॉजिटिव एंटीजन आया है, मेरे बॉडी के लिए हानिकर है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है और उसको ये कर देती है, ब्रेक कर देती है। मगर वही एंटीबॉडीज फिर माता के सर्कुलेशन से फीटस के में चली जाएंगी, तो क्या होगा, फीटस के आरबीसी को बैठ के फीटस के आरबीसी को ब्रेक कर डालेंगी, रिजल्टिंग इन कंडीशन नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, और फीटस की जान खतरे में डाल देगी और फीटस को हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार फीटस अगर ए और बी ब्लड ग्रुप का है, मदर ओ ग्रुप की है, एक का ब्लड दूसरे को चलता नहीं, दूसरे का ब्लड दूसरे को चलता नहीं, ऐसा मिसमैच हो गया तो भी देयर विल बी अ रिजल्टेंट हेमोलाइटिक कंडीशंस। ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे SLE हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऐसी कंडीशंस में, या माइलोडिस्प्लेजिया हो गया, दो तरीके की एंटीबॉडीज पाई जाती है, वार्म एंटीबॉडी और कोल्ड एंटीबॉडी। वार्म इज IgG एंड कोल्ड इज IgA। वो आरबीसी के ऊपर बैठ के आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देती है, तो वो ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन में इस तरीके से हिमोलिसिस हो सकता है। तो यहाँ तक हमने, और कुछ फिजिकल मैकेनिकल ट्रॉमा भी हो जाए, जैसे हार्ट में कोई वॉल प्रोस्थेसिस हो गया, उसकी वजह से भी आरबीसी को चोट पहुंच के हिमोलिसिस हो रहा है, वैसी भी कंडीशंस हो सकती है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ। सो इन ऑल दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन भी पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी देखी, उसके बाद एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखा, और एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखते देखते ही मैंने इन सारी कंडीशंस को थोड़ा थोड़ा रूप से उसको वर्णित भी कर दिया कि उसमें क्या क्या हमको मिल सकता है, कैसी कैसी कंडीशंस रिजल्ट हो सकती है, ताकि आपको एक ब्रीफली इन सब बातों की आइडिया आ जाए, ताकि आप आगे पढ़े तो ये चीजें आपको समझने में एकदम आसानी हो। मैंने इस प्रकार से आसान करके आपको बताई है। इसमें से कुछ नहीं समझा तो हम आगे देखेंगे। अब नाउ कमिंग टू दी आयुर्वेदिक पार्ट। तो देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या इन्वेस्टिगेशन हमको मिल सकता है। एचबी आरबीसी की संख्या कम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एचबी रहती है, इसलिए वो रिड्यूस मिलेगा। वहाँ माइक्रोसाइटिक है इसलिए एमसीवी रिड्यूस मिलेगा, आरबीसी काउंट रिड्यूस मिलेगा, सीरम आयरन रिड्यूस मिलेगा, सीरम फेरिटिन रिड्यूस मिलेगा, ट्रांसफेरिन और टीआईबीसी जो है, ताकि बॉडी को और जल्दी जल्दी बनाने की आवश्यकता है, इसलिए टीआईबीसी इंक्रीज मिलेंगी। पीएस में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर मिलेगा, बोन मैरो, एम्प्टी आयरन स्टोर्स और इथ्राइड हाइपरप्लेजिया। और जो मैक्रोसाइटिक है उसमें थोड़ा सा इसका उल्टा इन सेंस क्या मिलेगा कि एचबी तो रेडियस मिलेगा पर एमसीवी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि वो मैक्रोसाइटिक है, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी आयरन फेरेटिन इंक्रीज मिलेगा, और पीएस मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मिलेगी, और बोन मैरो में एमटी की जगह आयरन स्टोर्स भरे हुए मिलेंगे। नाउ कमिंग टू दी आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। क्योंकि कॉजेस में हमने अभी इतने सारे कॉजेस देखे हैं, ऑब्वियसली हमको प्रश्न पड़ता है कि हमारे साइंस में ऐसा कुछ बताया है क्या। तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट। दो तीन बातें अभी आप बोल सकते हैं कि क्या ऐसी हिमोलाइटिक कंडीशंस, क्या इस प्रकार के जो ये है, तो न्यूट्रिशनल और पोस्ट हिमोरेजिक और एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीजेस, ये हमको साफ साफ दिखाई देता है।
आचार्य सुश्रुत ने संप्राप्ति बताते हुए बताया है कि व्यायाम अम्लम मध्यम पदम दिवासत्म अति तीक्ष्ण निशम मानस प्रदूषण दोषा आदस्तजम पांडुरताम दयंती। उसमें मध्यम मृदम, तो अल्कोहल रिलेटेड कॉजेस हमने देखा, अल्कोहलिक लीवर डिसीज जो मेगालोब्लास्टिक के है जो कॉजेस में, क्रॉनिक लीवर डिसीज और अल्कोहलिक लीवर डिसीज उसके कारण है। मृदम मीन्स दी सॉइल, पहले मिट्टी खाना एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है पाइका जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि मिट्टी में आयरन बहुत मात्रा में होता है और जब डेफिशिएंट स्टेट होती है तो आदमी को वो चीज खाने की इच्छा होती है। तो खासकर प्रेग्नेंट लेडीज में और छोटे बच्चों में मिट्टी खाने की आदत इसी वजह से होती है। बट मिट्टी क्या है, मिट्टी में बहुत सारे फॉरेन बॉडीज होते हैं, उसमें वर्म्स जो रहते हैं उनके अंडे रहते हैं, वो रहते सिस्ट रहते, तो वो खाने से हमारे पेट में जो है राउंड वर्म्स फुलरली होके फिर से एनीमिया कॉज कर सकते हैं। विशियस साइकिल में बी रिपीटेड। नाउ एक बात तो साफ साफ आचार्य ने सबसे पहले की थी कि नास्ति अस्तुक्षत पांडु, ब्लड लॉस के बगैर पांडु एनीमिया नहीं होता। पांडु पांडु क्यों बोला है कि इसमें शरीर का कलर जो है पांडु वर्ण, पांडु केत की वजह से नहीं हुआ, पॉलन इज लाइक द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द पेंडामस। तो येलोविश व्हाइटिश कलर बॉडी में जब हो जाता है तो उस कंडीशन को पांडु कहते हैं, एंड दैट कोइंसाइड्स विद द एनीमिया। ओके, सो एनीमिया कैसे बॉडी में बताया, पहले ही आचार्य ने बताया कि ब्लड लॉस के बगैर पांडु नहीं होता, मतलब ब्लड लॉस के कारण पांडु होता है। दूसरा, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, तो इसमें हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट जब बताई तो मंडूर लोहा अग्नि भी ये सब पांडवा में हंति चिरे न घोरम, कि लोह भस्म मंडूर भस्म, ये जो आयरन कंपाउंड है इससे पांडु जल्दी ठीक हो जाता है। मॉडर्न वालों को ये समझने में बहुत समय लगा, 1924 और बाद में 1974 में इन बिटवीन इतना सफर गया कि कंफर्म होने में, बॉयड्स में जब कंफर्म किया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी आयरन की जो ये है आयरन की डेफिशिएंसी से होता है और आयरन सप्लीमेंट करने से करेक्ट होता है। हमारे आचार्य सुश्रुत ने पहले ही बता दिया है कि इसमें आयरन कंपाउंड देने से ये एनीमिया जल्दी ठीक हो जाता है, और ऐसे ढेरों आयरन कंपाउंड बताए हैं एनीमिया करेक्ट करने के लिए। तो ये इसलिए न्यूट्रिशन में हमको आयरन सप्लीमेंट करना है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, ये हमारे आचार्य को भी मालूम था और उन्होंने वेरी वेल वो हमारे यहाँ उद्धृत किया है। बात है ये बरोबर से ये सब बताने की व्यवस्थित रूप से, और वैसे बुक्स में अभी है दिया हुआ, मगर ये बुक्स में बाकी ऑथर्स ने ऐसा व्यवस्थित रूप से बताया नहीं है, उसको ये सारी चीजों को सामने लाया नहीं। मेरी बुक है पेपर 2 डिजीज के ऊपर, इसमें ये सब कुछ सारी बातें दी हुई है जो आपको इजी रेफरेंस के लिए और पूरी तरह से हर डिसीज को अच्छे से समझने के लिए काफी उपयोगी पड़ी रहेगी आपको। जो मानसिक फैक्टर्स है जैसे ये चिंता, साथ, इस वजह से भी मेंटल डिप्रेशन के कारण भी एनीमिया रिजल्टेंट होता है और वो देखने को भी मिलता है, ये भी कारण है ना। ब्लड लॉस के कारण होने वाला एनीमिया हमारे साइंस में रक्तजर्षण में बताया है, बेकाबू शोणित क्षय संभव हुआ ब्लड लॉस के कारण, हिमोरेजिक हिमोराइड्स, ब्लड निकलते रहता है उसकी वजह से एनीमिया होता है। पुरुष कृमि, जैसे कि मैंने बताया वर्म इन्फेस्टेशन के कारण एनीमिया होता है। पांडुता, पुरुष कृमि में पांडुता बताया, प्लीहा विरुद्ध जैसे ये स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स, हेमोलाइटिक कंडीशंस, उसमें एनीमिया होता है। और जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस जो मिलता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस में बताया तो कौन सा ट्यूबरक्लोसिस जो ठीक नहीं होता उसके लक्षण बताते हुए आचार्य ने बताया है, शुक्ले क्षण अन्न द्वेष्टारम ऊर्ध्वश्वासन पीड़ितम, ऐसे व्यक्ति को राजक्षमा खत्म कर देता है। शुक्ल क्षण, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी, सफेद क्यों, ये सीवियर एनीमिया के कारण, जिसको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, भूख न लगना भी एक फीचर है एनीमिया का, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को वो किल कर देता है। तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, न्यूट्रिशनल एनीमिया,
हिमोरेजिक ये कॉजेस हमारे यहाँ मिलते हैं। तो हिमोलिटिक को हमने कैसे समझना चाहिए? तो आचार्य ने अगली स्टेज बताते हुए बताया कि यदा तो पांडु पित्तरोगानि पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असुर्ग मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। तो पहला वर्ड जो है प्रदुष्य है, व्यायामम अम्लम मध्यम रुदम दिवासम अतिवतिष्णम निशमानस प्रदुष्य दोषा आदस्तम पांडुतम। नो नेक्स्ट पैथोलॉजी जो हो रही है पित्तज पांडु की, उसमें यदा तो पांडु रोगी पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असुर्ग मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते, कि पांडु का पेशेंट अगर पित्त का आहार विहार का सेवन ज्यादा करता है तो ऐसे में अश्रुग मानसंग दग्ध्वा। तो अश्रुग दग्ध्वा यहाँ जब प्रिडोमिनेंट पैथोलॉजी अश्रुग दग्ध्वा होती है, अब वो उस समय दे हैव यूज्ड द टर्मिनोलॉजी व्हिच वाज प्रिवेलिंग इन दोस डेज। उन्होंने हिमोलिसिस आरबीसी ब्रेकडाउन ऐसा नहीं बोला, अश्रुग दग्ध्वा। बट अश्रुग दग्ध्वा वर्ड रेफर्स टू द हिमोलिटिक कंडीशंस। ओके, और वो हिमोलिटिक कंडीशंस के कारण फिर आगे का सिंड्रोम, कामला, कुंभ कामला, ये सब बाकी के सब बताए हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस तक। और कौन सा पेशेंट सिद्ध ठीक नहीं होता है, तो अब हम थोड़ा सा लक्षण पे आएंगे, तब देखेंगे कि जिसमें कंठगत अबलत्वम, डिफिकल्टी इन डिग्लूटेशन, जिसको आजकल प्लमर विंसन सिंड्रोम बोलते हैं, हमारे आचार्य ने पहले बता दिया। और अंत्येषु शूनम हीनम परिमध्यम, वो जो बताया कि पूरे बॉडी में जिसको जनरलाइज एनासार का हो गया है, असाइटिस फॉर्म हो गया है, ऐसा पेशेंट सर्वाइव नहीं होता। शुन मुष्कोदरम। और एक भास्कर संप्रदाय के जो जैमिनी ऋषि है, उन्होंने अपने बुक में जब ये इसका वर्णन किया है, तो उसमें पांडु पुत्र जलोदर, पांडु का कॉम्प्लिकेशन जलोदर होता है, ऐसा भी बताया है। तो नेक्स्ट अब ये फीचर्स की अगर बात करें, तो हृदय स्पंदनम, टकीकार्डिया जिसको हमने देखा, श्रम, इजी फटिगेबिलिटी, त्वक स्फोटनम, क्रैक्स इन द स्किन, प्रेशन कुक्षुतः, पेरिऑर्बिटल एडिमा, पीत विनमूत्र और नेत्रत्वम, वो जो हमने देखा कि हेमोलिटिक कंडीशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है और आंखों को पीलापन देता है। उपद्रवास्तेषु अरुचि, पिपासा, छर्दी, ज्वर, मूर्धरज, अग्निसदा, शोफा एंड अंठोगतम अबलत्वम, मूर्छा, क्लमो, हृदय और पीडनम च। So there could be fainting, there could be dizziness, lightheadedness, easy fatigability, there could be chest pain and difficulty in deglutition, पदार्थों को निगलने में तकलीफ हो जाती है, खासकर फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। हेडेक, मूर्धरजा, these are all the features of anemia. Now karnashvedi hatanalaha, karnashvedi means there is tinnitus, which I enumerated earlier in the iron deficiency anemia features. Hatanala again indicates anorexia, shrama, brahma, this is vertigo, fatigability, the shwas. And what type of shwas this? Pavanti arohan ayas visheshi, means there is exertional breathlessness. Whenever you walk, there is breathlessness, क्योंकि अभी इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है और वो लो ऑक्सीजन जो है एक्सरसाइजिंग मसल को सप्लाई नहीं हो पा रहा है बरोबर से। देयर विल बी क्रैम्प्स, थोड़ा सा चले तो थकावट महसूस होगी, खासकर सीढ़ियां चढ़ते हुए तो खांपने लग जाएगा आदमी। तो आरोहण आय से विशेषा, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, सीधा बताया है। पिंडिकोद्वेष्टम, देयर क्रैम्प्स इन काफ मसल्स, ठंड लगेगी। ये सारे जो जितने भी शीर्ण लोमा, मैंने हेल्स द hairs become thin and brittle, शीर्ण लोम जल्दी गिर जाते। ये तो जितना भी सिंड्रोम मॉडर्न साइंस ने बताया वो पूरा पूरा एज सच हमारे साइंस में भी बताया है। सो आई थिंक हमारा टाइम भी एक्सीड हो गया है, और और हमको थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास था कि एनीमिया जैसे इतने वास्ट टॉपिक को एक लिमिटेड टाइम में कवर करने का, और दोनों साइंस को ऐसा तुलनात्मक देखने का। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ा सा पहले से बेटर आइडिया आई होंगी। और ये मेरे बुक्स है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्लिनिकल मेथड्स इन आयुर्वेदा,
पर्टिकुलरली आपको एनीमिया के बारे में जो पेपर टू का बुक है, जो सिलेबस के हिसाब से लिखा हुआ है, उसमें ये सारी बातें आपको पूरा इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको हर चीज एवरीथिंग साइंटिफिक नजर आएंगी। वो पढ़ने के बाद जो पहले एट रैंडम लगता था वो आपको एकदम साइंटिफिक नजर आने लग जाएगा, और वो पूरा एनालाइज करके बताया कि वो किस तरह से पूरा हर चीज साइंटिफिक है। अभी इसमें आपको कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई शंका हो, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकता है। कोई चीज समझ में ना आई हो, किसी चीज को फिर से समझाना पड़ रहा हो, तो आप मुझे कृपया पूछे। 5-10 मिनट का टाइम हमारे पास हम और दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी कंसाइज किया है। और अगर हम ज्यादा स्लाइड्स दिखाने पे चले जाते तो शायद इसको 2-3 घंटे भी कम पड़ जाते, और इसलिए ओरली मैंने सब लगभग हर चीज आपको बताने की कोशिश किया है। तो किसी को कोई शंका हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। यहाँ के बच्चे लोग को तो सब समझ में आ गया, और वो उम्मीद है क्या वो पांडु और एनीमिया अच्छे से आगे कर पाएंगे क्लासिफाई। और बाकी का जो है आपकी टेक्स्ट बुक, उसके बारे में भी आगे देने के लिए वो करेंगे। So I thank the organizers for giving me the opportunity to interact with your students, and also to propagate our organization, Rog Nidan Vikruti Vigyan Association. Thank you. So if there are no questions, then we can stop here. Yes, sir. Okay, thank you once again, Zahir, and convey my best regards to the principal Runge sir for giving me opportunity here once again.